गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है शागोज आर्किपेलागो। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन ने जो है एग्री कर दिया है कि वो शागोज आइलैंड्स की जो सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जो दीगो गार्शिया है, जो कि शागोज आर्किपेलागो का ही पार्ट है और वो करंटली यूएस का मिलिट्री बेस है, वो जो है 99 साल की लीज़ पर जो है वो यूएस के पास रहेगा। तो शागोज आइलैंड्स की अगर हम लोकेशन देखें तो लगभग 500 किलोमीटर दूर है वो मालदीव से, 1600 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया से। शागोज आइलैंड्स जो हैं वो पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे 16 सेंचुरी में। उसके बाद वो डच के पास ट्रांसफ़र हुए, फिर फ्रेंच के पास कंट्रोल आया और अल्टीमेटली जो है ब्रिटिश के पास कंट्रोल आया 1814 में। ठीक है। तो इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि ये सेंट्रल इंडियन ओशन में जो लोकेटेड है और ये एक स्ट्रेटजिकली वैल्यूएबल एरिया है मेजर शिपिंग लेन्स को मॉनिटर करने का। डीगो गार्शिया ही जो है वहाँ पर एक मेजर यूके यूएस का मिलिट्री बेस है, जो कि यूके और यूएस दोनों के लिए लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस हब का काम करता है। लार्जेस्ट कोरल अटोल्स भी यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है और बहुत ही मरीन बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है। साइंटिफिक रिसर्च और कंजर्वेशन एफर्ट्स भी जो है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो हुआ क्या कि 1965 में यूके ने शागोज आइलैंड्स को एक ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और 1968 में जब मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ तो यूके ने वो आइलैंड्स देने से मना कर दिया मॉरिशस को। डिगो गार्शिया जो है वो मेजर यूएस मिलिट्री बेस बन गया, जो कि एक क्रूशल रोल प्ले किया जिसने यूएस लेड ऑपरेशंस का अफ़गानिस्तान और इराक में 2000s में। 9/11 अटैक्स के बाद ये CIA की इंटेरोगेशन साइट भी बन गई। ठीक है। इंडिपेंडेंस होने के बाद मॉरिशस ने यूके को कहा कि हम ठीक है ये आइलैंड्स यूएस को देने के लिए तैयार हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए लीज पर, लेकिन आप यूएस में जो है मॉरिशस का यूएस का जो कोटा है फॉर शुगर इंपोर्ट्स वो आप इंक्रीज़ करवाओ ताकि मॉरिशस की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। यूके ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और 1968 से लेकर 1973 के बीच में यूके और यूएस ने फोर्सिबली जो है शगोसियंस को जो है वो रिमूव करना शुरू किया मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो एक तरह से ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की गई उस टाइम पर। 2015 में मॉरिशियस ने लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की अगेंस्ट यूके एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में। 2015 में पीसीए ने रूल किया कि यूके ने जो है मॉरिशियस के राइट्स को वायलेट किया है यूएन क्लॉज के अंडर। कोर्ट ने कहा यूके के अल्टीरियर मोटिव्स थे जब उन्होंने मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया शागोस आइलैंड्स के आसपास 2010 में। तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर ब्रिटिश और अमेरिकन डिफेंस इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज किया गया ओवर मॉरिशस राइट्स। ठीक है। जून 2017 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वोट किया मॉरिशस की रेजोल्यूशन के ऊपर ताकि एडवाइजरी ओपिनियन लिया जाए आईसीजे में। और एक तरह से ग्लोबल अपोजिशन जो है वो दिखाई गई उस टाइम पर कि कॉलोनियल लेगेसी के अगेंस्ट ग्लोबल अपोजिशन है। फरवरी 2019 में क्या हुआ कि आईसीजे ने ऑर्डर किया कि यूके को कि आप शैगोस आइलैंड्स को मॉरिशस को रिटर्न करो। यूके ने कहा कि आईसीजे के पास कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मैटर को डील करने के लिए। तो आप देख रहे हो कैसे यूएस और यूके जो हैं वो पूरे इंटरनेशनल लॉ को की धज्जियाँ उड़ाते रहे और बिना किसी जो सबसे ज़्यादा जो यूएस और यूके ही बोलते हैं आपको जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात हो या इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की बात हो, लेकिन जब इनकी खुद की बारी आती है तो ये बिल्कुल किसी की सुनते नहीं हैं। ठीक है। तो यूके ने जो है अब आफ्टर सो मच ग्लोबल ऑपोजिशन जो है अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स शागोस आर्किपेलागो पर जो है वो सीड कर दिए हैं। और यूके ने फिर भी डिगो गार्शिया को भी तक नहीं छोड़ा क्योंकि वहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस है 99 ईयर्स के लिए। ये इनिशियल पीरियड है, मतलब 99 ईयर्स के बाद ये लीज़ को रिन्यू भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 99 ईयर्स के बाद ये डिगो गार्शिया शागोस के पास ही आ जाएगा। मॉरिशस को अलाउ किया गया है कि वो रीसेटलमेंट प्रोग्राम चलाए आइलैंड्स पर सो एक्सेप्ट डिगो गार्शिया। यूके ने प्लेज किया है कि एक ट्रस्ट फंड भी बनाया जाएगा ताकि डिस्प्लेस्ड शैगोसियंस को वापस वहाँ पर बेनिफिट मिल सके। इंडिया ने शुरू से ही लेकर अभी तक मॉरिशस के क्लेम को शागोस आइलैंड्स पर जो है वो सपोर्ट किया है। इंडिया ने मॉरिशस के साथ अपने टाइज को डीपन करने के लिए ऐसा किया और इंडिया की पॉलिसी भी यही है डीकोलोनाइजेशन की। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप को सुप्रीम कोर्ट में। कहा है कि इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है रादर दैन अ स्ट्रिक्ट लीगल अप्रोच। ठीक है। तो
कंसर्न्स दिखाए हैं गवर्नमेंट ने कि क्रिमिनलाइज कर देंगे अगर हम मैरिटल रेप को, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है और सीरियस डिस्रप्शंस हो सकती है मैरिटल रिलेशनशिप्स में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स जो हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डीपली डिसरप्ट कर सकता है मैरिटल रेप। और ऑलरेडी जो रेप की डेफिनेशन है उसमें एक्सेप्शन है मैरिटल रेप, एक्सेप्शन नंबर 2। गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि हस्बैंड जो है वाइफ के कंसेप्ट को अगर वायलेट करता है तो वो अनएक्सेप्टेबल तो है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं अगर विद इन मैरिज जो है वो डिफरेंट होने चाहिए फ्रॉम एज कम्पेयर टू दोज आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, सेंटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि पार्लियामेंट के डिसीजन जो है जिसमें कि किसी भी तरह की मैरिज में इंटरफेरेंस जो है उसको आप जो है वो इनअप्रोप्रिएट मानो, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें एंटर करता है तो वो सोशो लीगल कंटेक्स्ट जो है वो मैरिज को जो है वो नहीं मतलब उसके अगेंस्ट जाएगा। एफिडेविट में ये भी कहा गया है कि मैरिटल सेक्सुअल एक्ट्स को रेप जो है अगर हम कहने लगेंगे तो वो एक्सेसिवली हार्श और डिसप्रपोर्शनेट होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज़ किया था, लेकिन किस में? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में, जिसमें कि विमेन जो है अबॉर्शन सीक कर सकती हैं अगर मैरिटल रेप के कंटेक्स्ट में उनकी प्रेगनेंसीज हुई हैं। तो सेक्शन 375 देखें अगर हम IPC का, उसके अंदर रेप की डेफिनेशन है उसमें, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं कि अगर मैरिटल रेप है तो वो डिक्रिमिनलाइज्ड है, या फिर अगर मेडिकल प्रोसीजर्स या इंटरवेंशंस हो रही हैं तो वो भी रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैन की तरफ से उसकी वाइफ पर, अगर वाइफ 18 ईयर्स से कम एज की है तो उसको रेप माना जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो एज थी वो 15 साल थी, उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया। अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो मैरिटल रेप की तरफ हिंट तो करता है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ एक लिव इन रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन जो मैरिज एक्ट, जो मैरिटल रेप की एक्सेप्शन है जो कि लॉ कमीशन जो जो कि आपके सेक्शन 375 में है, उसको रिजेक्ट कर दिया लॉ कमीशन ने कि उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो है जो इसके सपोर्ट में देखें, अगर हम मैरिटल रेप को हटाने के, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के, तो मैरिटल रेप जो है वो एक लीगल फिक्शन है। मतलब आप अदरवाइज़ अगर आप मैरिड नहीं हो और आप जो भी एक्ट कर रहे हो रेप के, तो आप पनिशेबल हो, लेकिन अगर आप मैरिज हो तो एक तरह से आपको एक राइट मिल गया वो एक्ट करने का। ठीक है, तो एक क्लास ऑफ वुमेन के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, एक क्लास ऑफ वुमेन के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो इस कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर हम इसके आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में देखें तो इस मिस यूज़ ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा हो सकेगा, क्योंकि जो है प्रूव करना मैरिटल रेप को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। आर्गूमेंट्स ये भी बनाए जा रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉ को बनाना ज़रूरी है रेप के, तो उस कंटेक्स्ट में जो है मैरिटल रेप्स के ऊपर भी जो है सेम आर्गूमेंट रखा जा सकता है कि फिर तो विमेन जो है उन्हीं को नहीं बल्कि मैन का भी रेप हो सकता है मैरिटल रेप में, है ना, क्योंकि जेंडर न्यूट्रलिटी की अगर बात है तो अगर हम देखें तो 42% कंट्रीज़ जो हैं क्रिमिनलाइज करती है मैरिटल रेप को थ्रू लेजिस्लेशन। यूनाइटेड नेशंस ने अर्ज किया है कंट्रीज़ को कि मैरिटल रेप को जो है वो लीगल लूप होल्स को क्लोज करके मैरिटल रेप को जो है वो एंड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ और बंगाली लैंग्वेजेस को। तो ये रिकॉग्निशन जो है क्लासिकल लैंग्वेज की बेस्ड ऑन क्राइटेरिया होती है जो कि लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स कमेटी एस्टैब्लिश करती है। तो इस कमेटी के मुताबिक हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, लगभग 1500 से 2000 साल पुराने ये हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट होने चाहिए जो कि कंसिडर किए जाएँ हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स। और नॉलेज टेक्स्ट होने चाहिए, मतलब पोइट्री, एपिग्राफिकल या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म, या फिर वो डिसकॉन्टीन्यूस होनी चाहिए विद लेटर फॉर्म्स ऑफ और इट्स ऑफशूट्स। तो बाकी के अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस देखें वो हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया। ओके, तो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एनुअली देती है स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस को जो है इन क्लासिकल लैंग्वेजेस में। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ बनाए जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो एक प्रोफेशनल चेयर्स भी बनाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एक एफिलिएट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का, जो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। और ये ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स का ग्रुप है जिनका एम है कि स्पीड अप की जाए अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन और कन्वर्जेंस। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ की, ठीक है। और मेंबरशिप से हार्मोनाइज होती हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। और ये सपोर्ट करता है इनोवेशन को और टाइमली एक्सेस टू न्यू मेडिकल डिवाइसेस भी। इंडिया जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज में हेल्प मिल जाएगा टेक्निकल टॉपिक्स से किससे रिलेटेड, और वो अदर रेगुलेटर्स के साथ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने जो है जो आई एम सॉरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम जो है बजट में अनाउंस की थी वो अब लॉन्च कर दी गई है, जो कि एड्रेस करेगी यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इंडिया में, उनको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देगी रियल वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं 1 करोड़ यूथ को ओवर 5 ईयर्स इन टॉप 500 कंपनीज। तो एक पोर्टल बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, उस पर ये प्रोजेक्ट उसके ऊपर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा जो है इंटर्न्स को 4500 रुपीज़ का, और एडिशनल 500 रुपीज़ दिए जाएंगे कंपनी द्वारा एज CSR, ठीक है। और ये वन टाइम ग्रांट भी दी जाएगी 6000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट द्वारा। इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगी इंटर्न्स को। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? कैंडिडेट्स जो है वो 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, जिन्होंने 10th या फिर उससे ज़्यादा जो है एजुकेशन ली है। पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये जो है नहीं मिलेगा, या फिर इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें भी ये नहीं मिलेगा। कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएट किया है प्राइमरी इंस्टीट्यूट से वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा रही है पिछले साल, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू यूथ देने का ये प्रोग्राम है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया की मेंबरशिप ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कोलैबोरेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। तो इसको 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था एज सक्सेसर टू इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन। तो 16 कंट्रीज़ ने इस हब को ज्वाइन किया है। इंडिया की तरफ से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया को एक्सेस मिलेगा वास्ट नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज का। कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, और इम्प्रूव कर पाएगी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना इंडिया के वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एड्स को एंड करने का बाय 2030 वो अचीव नहीं कर पाएगा। UN एड्स के जो एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसेंटली बोला है। तो जॉइंट UN प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS है क्या? एक इनोवेटिव जॉइंट वेंचर है UN का, जिसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि शेयर्ड विजन था कि ज़ीरो न्यू HIV इन्फेक्शंस होनी चाहिए, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए और ज़ीरो एड्स रिलेटेड डेथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर 11 UN के ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं ताकि एड्स को एपिडेमिक को 2030 तक ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें जो है इसके मिशन ये है कि सॉलिडारिटी में बोलना उन लोगों के बारे में जो इससे अफेक्टेड हैं, पॉलिटिकल, टेक्निकल, साइंटिफिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, और बेसिकली ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन भी करता है HIV की एपिडेमोलॉजी पर। तो ये जॉइंट प्रोग्राम जो है वो UN एड्स सेक्रेटरीट द्वारा कोऑर्डिनेटेड है, जो कि हेडक्वार्टर्ड है जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Chagos Archipelago. This topic is important for your international relations. So Britain has agreed to transfer sovereignty of Chagos Islands, which is a group of 60 islands in the Indian Ocean, to Mauritius. And this deal would ensure the future of UK-US military base on Diego Garcia also. So Chagos Islands are located about 500 kilometers south of Maldives and about 1600 kilometers southwest of India. And according to a report, Chagos Islands were discovered by the Portuguese navigators in 16th century. Later on, it got transferred to the Dutch, then to the French, and ultimately it landed in the kitty of Britain in 1814. And archipelago's location in the central Indian Ocean makes it strategically valuable for monitoring major shipping lanes. And
the Diego Garcia, the largest island of Chagos Islands, it is also hosting a major US UK military base, which is crucial for operations in the Indian Ocean and surrounding regions. It serves as a logistics, surveillance, and intelligence hub for both UK and US. And it is home to one of the Chagos archipelago is home to one of the largest coral atolls, and it is rich in marine biodiversity, and which makes it important for scientific research and conservation efforts also. So what happens is that happened in the background is that in November 1965, UK declared the Chagos Islands as an overseas territory, and after Mauritius gained independence in 1968, the UK refused to return those islands. Okay, so Diego Garcia became the site of a major UK-US military base, which played a crucial role in US-led operations in Afghanistan and Iraq in 2000s. And after the 9/11 attacks, it also started serving as a CIA interrogation site. So, after gaining independence, Mauritius proposed to UK that they will allow leasing the islands to the US for defense purposes, but only if, in exchange, it allows the increased US quota for sugar imports, which would basically help Mauritius economy. But UK rejected this process or this proposal, saying that US is not involved in any treaty despite benefiting from these islands. So, are you witnessing how the UK and US both are violating the sovereignty, and they're still involved in colonial usurpation of territories worldwide? Okay, so between 1968 and 1973, the UK and US forcibly removed their native Chagosians so as to make way for the military base. So these human rights violations were dismissed, and they were not entertained by the UN also at that time. So in 2015, what happened is that Mauritius initiated legal proceedings against the UK at the Permanent Court of Arbitration. And in 2015, the PCA ruled that the UK had violated Mauritius' rights under the UN clause, and court also found that UK had ulterior motives when it created a marine protected area around the Chagos Islands in 2010. And this ruling also highlighted that British and American defense interests were prioritized over Mauritius rights. In June 2017, the General Assembly voted on Mauritius' resolution to seek an advisory opinion on the Chagos Islands from the International Court of Justice, and this also reflected the global opposition to colonial legacies and suggested that the UN was unlikely to endorse continued colonial control. In February 2019, the ICJ ordered the UK to return the Chagos Islands to Mauritius, and even then, the UK claimed that ICJ had no jurisdiction over this matter. Okay, so just see how US and UK, they openly violate every international law. They they commit human rights violations worldwide, and they feel that they are superior to UN or any other international law. Okay, so what has happened now is that after so much international pressure as a face saving and India's backing of Mauritius, UK has now decided that they will relinquish their control over Chagos archipelago, but still they are continuing to hold sovereign rights over Diego Garcia, initially for a period of 99 years, and this of course can be renewed also after that period. So Mauritius is now going to implement a resettlement program on these islands, except for Diego Garcia. UK has also pledged to create a trust fund to benefit the displaced Chagosians. India has maintained steadfast support to Mauritius' claim, and India because India wants to deepen its ties with Mauritius also. Okay. So the next topic is criminalization of marital rape. This topic is important for your social issues. So central government has opposed the idea of criminalizing the marital rape in the Supreme Court, and it has said that this issue needs a comprehensive approach rather than a strict legal approach. So government has expressed concerns that criminalizing marital rape could have significant consequences for the institution of marriage, and it could lead to serious disruptions in marital relationships. So the rape could severely this making this sexual acts between husband and wife punishable as rape could severely impact conjugal relationships and disrupt the institution of marriage. And after so much deliberation, the parliament had retained the exception number 2 to the section 375 of IPC, which basically exempts marital rape from being classified as a criminal offense. While the government acknowledged that the husband's violations of his wife's consent is unacceptable, it argued that the consequences within the marriage should differ from those outside of
of it. Okay. The center also urged the Supreme Court to not interfere with Parliament's decision to retain the marital rape exception, and it also argued that such interference would be inappropriate given the socio-legal context of marriage in India. Okay. The affidavit also suggested that labeling marital sexual acts as rape could be considered excessively harsh and disproportionate in the context of marriage. In 2022, the Supreme Court had recognized marital rape for the purposes of medical termination of pregnancy. Basically, those women who wanted to seek abortions for pregnancies resulting from marital rape were recognized by the court. So, what is Section 375? It defines the acts that constitute rape by a man, and these provisions have two exceptions that it decriminalizes marital rape, and it also mentions that medical procedures or interventions will not be rape. Okay, but in 2017, Supreme Court ruled that sexual intercourse by a man with his wife, if the wife is under 18 years of age, will be considered as rape. So earlier the age of consent was 15. Okay, now it was increased to 18. So there is also, if we want to see history of marital rape in India, Domestic Violence Act hints at marital rape by any form of sexual abuse in a live-in relationship or marriage relationship, but the Law Commission of India rejected the proposal to remove the marital rape exception to the section 375. So, in support of marital rape, we can see that marital rape as an exception creates a legal fiction where even if all the requirements for rape are otherwise fulfilled, law does not seem it. The law does not deem it to be rape because if the parties are married. So this is a arbitrary exception because we are denying one class of women rights, that is the married women. We are denying them the rights which are otherwise guaranteed to all other women. But there are also arguments which are against criminalization of marital rape. For example, misuse of the law, which is a big reason why several individuals, jurists, and even men rights activists have raised alarm over the criminalization of marital rape. It will be very difficult to prove, and it will be a very complex issue, which has prevented marital rape to be criminalized as of now. Okay, so where there are already arguments with respect to making the rape law gender neutral, so in that case the same arguments can also be made applicable to the marital rape exception. Okay, so in the world about 42 countries criminalize marital rape through legislation, and UN has been urging countries to end marital rape by closing legal loopholes. So the next topic is classical languages. This topic is important for your art and culture section. Union Cabinet has recently approved the classical language status to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali languages. So the recognition of a classical language is based on the criteria established by a linguistic experts committee, and these languages can be considered classical if they had high antiquity or early text or recorded history over a period of 1500 to 2000 years, a body of ancient literature or text which is considered as heritage by generations of speakers, knowledge text, especially those written prose texts in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence, and classical languages and literature could be distinct from its current form. So there are other classical languages like Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia. So once a language is designated as classical, the Ministry of Education starts providing benefits like establishment of 2 major international awards annually for the scholars of eminence in that language. Centers of excellence for studies in the classical language are also established. UGC also creates professional chairs in central universities dedicated to that classical language. Okay. So the next topic is International Medical Device Regulators Forum. This topic is important for your economy section. So India has recently become an affiliate member of the International Medical Device Regulators Forum, which was established in 2011, and it is a group of global medical device regulators whose aim is to speed up the adoption of international medical device regulatory harmonization and convergence. Its members include national regulatory authorities of the members and also the WHO. The membership helps to harmonize regulatory requirements across the globe, and it also helps to support innovation and timely access to new medical devices. Because it has become an affiliate member, India will be able to participate in the open sessions so as to have information exchange on technical topics with other regulators. Okay.
So the next topic is PM internship scheme. This topic is important for your economy and your social issues topic. So recently, the Prime Minister's internship scheme, which was announced by the Union Finance Minister during her budget speech, was launched. So this will enhance youth employability in India by offering them hands-on exposure to real-world business environments. So the scheme aims to provide internship opportunities to 1 crore youth over a period of 5 years in top 500 companies. And this pilot project will be implemented through an online portal which will be managed by the Ministry of Corporate Affairs. So a monthly stipend of 4,500 will be provided to these interns from the central government through DBT mode, and an additional 500 rupees will be given by the companies companies through their CSR or corporate social responsibility. These interns will also be provided by with a one-time grant of 6,000 rupees and insurance coverage also. This internship will be for a period of 1 year, and candidates aged between 21 and 24 years will be eligible for it. And those who have passed class 10 or higher will be eligible for it. They should not be postgraduates, and individuals or from families with government jobs are excluded. A candidate who has graduated from primary institutes will not be eligible, and a person who has earned an income of 8 lakh or more will not be eligible uh, also. Okay, so basically the aim is to provide on the job training to youth and exposure to real life work environments. So the next topic is International Energy Efficiency Hub. This topic is important for your environment section and also your international relations. So recently, Union Cabinet has approved India's membership to the Energy Efficiency Hub, which is a global platform dedicated to fostering collaboration and promoting energy efficiency worldwide. So it was established in 2020 as successor to the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation. So 16 members have joined this hub, and from India, Bureau of Energy Efficiency will be designated as the implementing agency for the for this hub. Okay, so India will gain access to a vast network of experts and resources. The country will also contribute to global efforts to address climate change by promoting energy efficient technologies and practices, and it will also improve energy security of India. Okay, so the next topic is joint United Nations program on HIV/AIDS. This topic is important for your social issues. So without India doing a large part of heavy lifting, it is unlikely that the world will meet the Sustainable Development Target of ending AIDS as a public health threat by 2030. This has been said by UN AIDS Director for the Asia Pacific. So, what is Joint United Nations Program on HIV/AIDS? So, it is an innovative joint venture of the UN family established in 1994 with the vision of zero new HIV infections, zero discrimination, and zero AIDS related deaths. So, UN AIDS unites the efforts of 11 UN organizations with the goal of ending the AIDS epidemic by 2030. So UNAIDS fulfills its missions by uniting the efforts of the UN, speaking out in solidarity with the people who are most affected by HIV, and mobilizing political, technical, scientific, and financial resources for empowering the HIV people. And it also leads the world's most extensive data collection on HIV epidemiology. The joint program is coordinated by the UNAIDS Secretariat, which is headquartered in Geneva, that is in Switzerland. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.